Hello everybody and welcome to Learn with Zenith Guru. My name is Pratyaksha and in this video we'll be covering class 9 history's first chapter, in which we'll be going through the texts, we'll be learning we'll be going through each and every line so that it's easier for you people to understand. So let's start with the chapter. The chapter is based on the French Revolution as given, and let's start. So what basically happened, we'll be considering these events as the initial events that took place, right? हर चीज एक बड़े मेजर इवेंट के होने से पहले ना कुछ छोटे छोटे स्मॉल इवेंट्स होते हैं जो उस मेजर इवेंट में इवेंचुअली कंट्रीब्यूट करते हैं. तो 14 जुलाई 1789 को पेरिस में क्या हुआ, ट्रूप्स मार्च करने लगे. ठीक है, अब लोगों को ये भी रूमर्स आ रहे थे कि किंग इन्हें बोल देंगे कि भाई ओपन फायर कर दो सिटीजन्स पे. नाउ ऑब्वियसली सिंस सिटीजन्स वर स्कैर्ड, दे फॉर्म्ड पीपल्स मिलिटिया. पीपल्स मिलिटिया क्या होती है कि लोगों ने अपनी एक आर्मी बना ली in order to defend themselves. So 7,000 people gathered in front of the town hall, and then they broke into number of government buildings in search of arms, because military is nothing without its ammunition. आप हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कितने टाइम तक रहोगे, राइट? यू ऑब्वियसली नीड आर्टिलरी एंड द एम्यूनिशन. सो they broke into various groups in order to search the ammunitions. Now finally a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city. ठीक है, and they stormed the fortress prison Bastille. वहां पे उन्हें पता था कि यहाँ पे हमें हमारी आर्टिलरी और एम्यूनिशन पक्का ही मिलेंगे. ठीक है, in the armed fight that followed, the commander of Bastille was killed और prisoners जो थे वो रिलीज हो गए. उन्होंने क्या किया, उन्होंने फोर्ट्रेस को ना एकदम डिमोलिश कर दिया और उसके जो पत्थर थे उन्हें बेचा मार्केट में. और उन्हें खरीदने वाले वो लोग थे जो इस फोर्ट के डिस्ट्रक्शन को हमेशा याद रखना चाहते हैं. सो दे केप्ट द डिमोलिश्ड स्टोन फ्रॉम द फोर्ट्रेस व्हिच वाज नो मोर देयर एज अ सोवेनियर. ठीक है, now the days that followed saw more rioting both in Paris and countryside. ठीक है, इसके आने वाले दिनों ने इससे भी ज्यादा आपके राइट्स देखे. हाँ, तो आने वाले दिनों ने आपके इससे भी ज्यादा राइट्स देखे कंट्री साइड में, मेन सिटी में. ओके, एंड हिस्टोरियंस ऐसा भी कहते हैं कि these were the events that eventually led to the execution of the king of France. So let's start. Okay. So French society during the late 18th century. ठीक है, ये हम कौन सी सेंचुरी के बारे में पढ़ रहे हैं? 18th सेंचुरी के बारे में, लेट 18th सेंचुरी के बारे में टू बी प्रिसाइज. ओके, एंड वील बी रीडिंग अबाउट द फ्रेंच सोसाइटी. So in 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. So he was the king of France. He was 20 years old and he was married to the Austrian princess Marie Antoinette. ठीक है, ये उनकी वाइफ थी. Upon his accession, the new king found an empty treasury. जब उन्होंने जब उनको थ्रोन दिया गया, when it was passed to him, he found that the treasure was almost empty. ठीक है, long years of war has drained the financial resources of France. जब बहुत सारे टाइम तक फ्रांस में लड़ाई चली थी, उस वजह से क्या हुआ था, जो वहां का ट्रेजर था वो ड्रेन हो चुका था, खत्म हो चुका था. क्योंकि ऑब्वियसली जब लड़ाई चलती है तो ट्रूप्स के लिए सब जितने भी एम्यूनिटीज होती हैं, एम्यूनिशन के लिए, उनके इधर उधर आने जाने के लिए आपको क्या कहते हैं, वो सब चीजें रिसोर्सेज आपको देनी पड़ती हैं. Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. ठीक है, वर्सलिस. तो यहाँ पे जो मेंटेनेंस थी आपके, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब क्या होता है, कुछ बहुत बड़ा, समथिंग वेरी ह्यूज एंड वेरी
lavish, तो उस मेंटेनेंस में भी इतना पैसा लगता था. Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain the independence from the common enemy Britain. And now Britain was expert in making colonies. We all know that it had colonies almost all over the world. So, अंडर लुइस 16 फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प किया था कि वो इंडिपेंडेंस गेन कर ले फ्रांस की एनिमी ब्रिटेन से. अब देखते हैं. द वॉर एडेड मोर टू अ बिलियन लिवर्स टू अ डेथ. डेथ, do not pronounce it death, it is debt, debt, which means a sort of loan, कर्जा. ठीक है, had already risen to more than 2 billion livres. Now what was livres? It was the currency. ठीक है, you can refer it here. Livre, unit of currency in France, discontinued in 1974. Lenders who gave the state credit now began to charge 10% of interest on loans. अब obviously इतना ज़्यादा लोन हो गया था and they were not able to pay it back. So the lenders हुआ lenders जिन्होंने पैसा दिया होता है, जिन्होंने कर्जा दिया होता है, लेनदार जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं, वो 10% अब अपना चार्ज करने लगे थे. So the French government was obliged to spend an increasing percentage on its budget on interest payments alone. To meet its regular expenses such as cost of maintaining an army, courts running on government offices or universities, the state was forced to increase tax. अब देखिए, जब किसी भी देश में, ये नॉर्मल हर देश की ना एक आपके कह लीजिए ऐसा फाइनेंशियल या फिर इकोनॉमिकल लेआउट ही ऐसा होता है कि देश में अगर खर्चा बढ़ रहा है किसी भी रीजन को लेके, ठीक है, तो उसका जो आप कह सकते हैं, और अगर उतना देश के पास फंड्स नहीं आ रहे हैं, so it is very obvious that the country will increase the taxes and will take it from the common people. No matter that how much the state is doing for the common people, how much welfare is it doing, it usually is never being counted. पर अगर उन पे कर्जा बढ़ रहा है तो वो कॉमन लोगों का टैक्स बढ़ा देंगे ताकि उनके पास ज्यादा पैसे है तो वो अपने डेट भर पाए. Yet even this measure would not have sufficed. French society in the 18th century was divided into 3 states. Now this is very, very important, okay, that the French society was divided into 3 states. One and only members of 3 states paid taxes. ठीक है, जो 3 स्टेट थे, एस्टेट, ठीक है, उसी के लोग पे करते थे टैक्सेस को. अब देखते हैं वो कौन थे. The society of estates was part of the feudal system that dated back to the Middle Ages. यहाँ पे feudal system आपका क्या होता था? पुरानी फ्रेंच सोसाइटीज में फ्यूडल सिस्टम बहुत फेमस था. उसमें आपका प्रॉपर डिवीजन होते थे, ठीक है, कि मतलब टॉप पे आपके कौन आ रहे हैं, एंड देन हाउ देन केम द मिडिल क्लास पीपल. जैसे आज की नॉर्मल सोसाइटी में आपका फ्यूडल सिस्टम कैसा चलता है, आपके सबसे पहले आ गए रिच, the businessman, the tycoons, etc., right? And then come middle class people like us, you know, and that also there are divisions of upper middle class, lower middle class, and then are poor people. So that's how the society is divided. So almost on the same parameters, it was divided in the Middle Ages. The term old regime is usually used to describe the society and institutions of France before 1789. Now let's see. यहाँ पे एक फिगर 2 है. ये फिगर 2 जो है ना, ये आपको बता रहा है कि society of estates. Note that within the third estate some were rich and others were poor. तो बस इन्हें ही देना था. अब फर्स्ट estate में आपके कौन आते हैं? क्लर्जी आते हैं. क्लर्जी मैन जो हुआ करते थे वो आते हैं. उसके बाद सेकेंड स्टेट में आपके नोबिलिटी आते हैं. एंड देन व्हेन यू कम टू द थर्ड स्टेट वी हैव several sub categories. We have big businessmen, merchants, courts, officials, lawyers. Then we have peasants and artisans. Then
we have small peasants, landless labor, and servants. So these were the three who were the considered as the people of third estate. Okay. Okay, now let's see. Peasants made up to 90% of the population. ठीक है, peasants जो थे वो 90% थे population के. However, only a small number of them owned the land they cultivated. About 60% of the land was owned by nobles, the churches, and other richer member of the third estate. तो यहाँ पे आपको अभी तक इतना पढ़ के तो basically एक चीज clear हो गई होगी that the class division, okay, was very prominent, and the gap between the rich and the poor was also very huge. So the member of the first two estates, that is the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by the birth. अब जैसे अगर आप इंडिया में बात करें, ठीक है, तो हमारे यहाँ बकायदा हमारा कास्ट सिस्टम था और उसमें ये वाले प्रिविलेजेस कौन एंजॉय करते थे? द ब्राह्मण्स एंड द क्षत्रियास. तो अगर आप उसको फ्रेंच सोसाइटी से लिंक कर ले तो यहाँ पे ये क्लर्जी और नोबिलिटी हो जाएंगे. ठीक है, वो बाय बर्थ एंजॉय करते थे certain privileges. The most important of these were exemption from paying taxes to the state. Even though they were considered at the top, but they didn't have to pay the tax. The tax was only taken from the poor people, like businessmen वगैरह भी देते थे, and they were able to give it. But what about the peasants, the landless laborers, the farmers, the poor farmers who are not making enough for their livelihood? They were allowed, they were, levied onto these heavy taxes, and later they were unable to pay it as well. But they were the ones who have to pay it. Since clergy and nobility enjoyed this really good, birth privileges, they were exempted from paying taxes. The nobles further enjoyed feudal privileges. ठीक है? These included feudal dues, which they extracted from peasants. Peasants were obliged to render services to the lord, to work in his house and fields, to serve in the army, or to participate in building roads. ठीक है? तो peasants को they were obliged. It means कि उन्हें ये करना ही करना था. There was no choice. The church too extracted its share of taxes called tithes, ठीक है, from the peasants. And finally, all members of the third estate had to pay taxes to the state. Third estate में कौन-कौन थे आपके? फिर से रिवाइज कर लेते हैं. We had the big businessmen, merchants, court officials, lawyers, peasants and artisans, small peasants, landless laborers and servants. ठीक है? तो चर्च था ना, वो भी अपने टैक्सेस, ऑब्वियसली चर्च में भी मेंटेनेंस होता है, वहां पे भी उन्हें पेमेंट्स करनी होती है, दे हैव टू गिव दी सैलरीज. तो ये सारी चीजें भी वो किससे लेते थे? थर्ड एस्टेट वाले लोगों से लेते थे, एंड इट वाज कॉल्ड द टिथेस. You can, whatever new words you're coming across, you can learn it from here. अब देखिए इसमें क्या क्या आता था आपका? डायरेक्ट टैक्स आता था, जिसे हम टैले कहते थे, एंड नंबर ऑफ इनडायरेक्ट taxes too, which were levied on articles of everyday consumption like salt and tobacco. अब देखिए डायरेक्ट टैक्स तो वो होता है जो आपकी सैलरी में से कट जाता है. इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जो आप चीजों पे देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू आर बाइंग अ बॉटल ऑफ वाटर, so there will be certain amount of tax implemented on it, so you have to pay. That is the indirect tax. अब आपको लगेगा ये तो बॉटल का ही प्राइस है, बट नहीं, उसमें आपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स भी दिया है. तो यहाँ पे लोग चर्च से डायरेक्ट, चर्च जो था वो डायरेक्ट टैक्स भी लेता था और उसके साथ साथ वो इनडायरेक्ट टैक्स भी लेता था, जो कि रोज के एवरीडे कंजम्पशन की जो चीजें होती थी उससे वो ले लेता था. फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट हो गया, टोबैको हो गया, बिकॉज द चर्च न्यू दैट पीपल विल बी कंज्यूमिंग इट डेली.
The burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third estate alone. Okay. Now comes the one of the most important topic. जब हम कहीं पे भी किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट में, चाहे वो वर्ल्ड हिस्ट्री हो चाहे वो इंडियन हिस्ट्री हो, अगर हम डिविजन सुनेंगे या पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है, भले ही हम कॉलोनियलिज्म क्यों ना पढ़ रहे हो या फिर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों ना पढ़ रहे हो, अगर हम डिविजन सुनते हैं हमारी सोसाइटी में, ठीक है, या फिर वेरियस क्लासेस में, तो एक चीज जो कंफर्म हो जाती है वो ये होता है कि देयर विल बी द सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसको हम ऑप्रेस्ड कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऑप्रेस्ड होती है, इट इज बीइंग let's say suppressed by the section of society which enjoys all the liberties and powers. तो यहाँ पे भी चालू हो गया था अब वो स्ट्रगल, क्या स्ट्रगल था, वो सर्वाइव करने का, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया कि सिर्फ थर्ड स्टेट को देने थे हमारे टैक्सेस, उसमें हमारे लैंडलेस लेबर्स, फार्मर्स, ये सब इंक्लूडेड थे और उनके लिए इट वाज रियली टफ टू पे द टैक्सेस। तो देखिए, जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो आपकी 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई थी, लेट्स से 1715 से 1789 तक। इससे क्या हुआ था, रैपिड इंक्रीज हो गई थी डिमांड में फूड ग्रेन्स की, ठीक है, ऑब्वियसली जितनी पॉपुलेशन उतना आपका कंजम्पशन होगा, और उस हिसाब से प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स नहीं हो पाए थे। अब ऐसा आपने इंडिया में भी देखा होगा, एक सिचुएशन आई थी, कौन सी, पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारे इंडिया में एक सिचुएशन आई थी जब हमारे यहाँ ग्रेन्स की शॉर्टेज हो गई थी एंड वी वर इम्पोर्टिंग ग्रेन्स। उस टाइम पे इंडिया ने ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्लीमेंट किया था अंडर एम स्वामीनाथन, जिसे हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं इंडिया में, और उसके बाद इंडिया इंपोर्ट कर रहा था और कहाँ वो डेफिसिट में था और इंडिया सरप्लस में चला गया और इतने फूड ग्रेन्स होने लगे दैट वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग। तो ऐसे ही अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री से इसे कनेक्ट करें, स्पेशली फ्रेंच रेवोल्यूशन से, तो क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी, कंजम्पशन बढ़ा, so the and the production was not at keeping up pace with the demand. तो इससे क्या हुआ कि प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज द स्टेपल डाइट ऑफ मेजॉरिटी रोज रैपिडली। जो ब्रेड नॉर्मल, जो उन लोग की एक स्टेपल डाइट थी जिसे वो रोज कंज्यूम कर रहे थे, उसकी तक प्राइस बहुत रैपिडली बढ़ गई। उसके बाद क्या हुआ, मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप्स हुज ओनर फिक्स्ड देयर वेजेस, बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस with the rising price. Ab for example, if you would someday sit with your grandfather and discuss any of these issues, he may tell you that एक टाइम पे कभी उनकी सैलरी इतने 1000 रुपए रही होगी, हो सकता है कभी वो 5000 रही हो, 6000 रही हो, और हमें लगता है बस 5000 सैलरी थी, बट अगर उस टाइम के हिसाब से हम कंपेयर करें तो उस टाइम का 5000 हो सकता है आज के टाइम के 20-25 हजार के बराबर हो। तो यहाँ पे यही हो रहा था कि मोस्ट वर्कर्स जो थे उनकी सैलरी तो पुराने टाइम के हिसाब से चल रही थी, बट क्योंकि प्राइसेस बढ़ गया था, इन्फ्लेशन आ रहा था, वी कैन अगेन रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स की भाई जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, उनके वेजेस नहीं बढ़ रहे थे इसीलिए वो खरीद नहीं पा रहे थे चीजें। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड। उसके बाद थिंग्स बिकेम वर्स, चीजें और खराब कब हो गई, ड्रॉट और हेल रिड्यूस्ड द हार्वेस्ट, ठीक है। This led to subsistence crisis, something that occurred frequently in France during the old regime. ठीक है, अब subsistence crisis क्या होता है, an extreme situation where the basic means of livelihood are endangered, ठीक है, एक इतनी ज्यादा सीरियस या फिर डेंजरस सिचुएशन हो जाती है जिसमें आपकी बेसिक, अब जैसे हम अगर कोविड टाइम से रिलेट करें तो वहां पे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी हुआ था जो इतने प्रिविलेज्ड नहीं थे कि उनको बेसिक जो खाने की चीजें होती हैं, फूड ग्रेन्स हो गए, आपकी नॉर्मल रोज के खाने की चीजें भी वो नहीं, जो मतलब वो नहीं इकट्ठा कर पा रहे थे, वो नहीं खरीद पा रहे थे, इसे हम क्या कहते हैं, हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी हाउ अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपेंड।
ये हुआ बैड हार्वेस्ट, ठीक है। बैड हार्वेस्ट मतलब अभी हमने ड्रॉट या फिर हेल आपका वो पढ़ा रीजन, ठीक है। तो फसल अच्छी नहीं हुई। अभी भी आप अगर आप टमाटर के दाम देखें जो कि पूरे न्यूज में छा गया है, टोमेटोज आर कॉस्टिंग अराउंड 200 रुपीज पर केजी, और वो भी इसलिए क्योंकि उनकी हार्वेस्ट उतनी अच्छी नहीं है। तो बैड हार्वेस्ट की वजह से द पुअर कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास envisages to end to privileges, ठीक है। In the past, peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity, but they lacked the means and programs to carry out full-scale measures that would bring out a change in the society and economic order, ठीक है। पीजेंट्स ने या फिर आपके वर्कर्स ने रिवोल्ट तो करा कि भाई टैक्सेस बढ़ रहे हैं हमारे, हमें फूड स्कार्सिटी हो रही है, हमें फूड सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, बट व्हाट दे लैक्ड वाज दे वर नॉट एबल टू कैरी फुल स्केल मेजर्स, ठीक है, जिससे वो रियल सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंज ले आ पाएंगे, ठीक है। This was left to those groups within the third estate who had become prosperous and had access to education and new आइडियाज, ठीक है। तो अब ये जो आइडिया था ना एक सोशो इकोनॉमिक चेंज लाने का, ये उस थर्ड स्टेज के लोगों को दे दिया गया था जो अब प्रॉस्पेरस हो चुके हैं, जो पढ़ लिख रहे हैं, उनके पास नए और इनोवेटिव आइडियाज हैं। द 18th century widened the emergence of social groups, ठीक है। 18th century में क्या होने लगा, सोशल ग्रुप्स आपके बनने लगे, और जिन्हें हम क्या कहने लगे, मिडिल क्लास, ठीक है। तो इसे हम मान सकते हैं एमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास। एमर्जेंस हो रहा था ऑफ अ डिफरेंट क्लास विच वाज द मिडिल क्लास। Okay, so they earn their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were either exported or bought by the rich members of the society, ठीक है। तो अब मिडिल क्लास के पास पैसा कहाँ से आ रहा था, या तो वो मतलब वो ट्रेड कर रहे थे या फिर मैन्युफैक्चर कर रहे थे चीजें जैसे कि वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स that were either exported or bought by the rich members of the society, ठीक है। इसके साथ साथ मर्चेंट्स और जो मैन्युफैक्चरर्स थे जो थर्ड स्टेट के थे, वो क्या इंक्लूड करते, प्रोफेशंस सच एज लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। तो ये भी आपके किस में काउंट होने लगे थे, मिडिल क्लास में, ठीक है। ये सब क्या थे, एजुकेटेड थे एंड दे बिलीव्ड दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। अब जैसे बाय बर्थ कौन हमने ऊपर पढ़ा था, प्रिविलेज थे आपके nobility and clergy, they were privileged by birth। तो ये मिडिल क्लास लोगों की नई एक थिंकिंग एमर्ज हो रही थी, न्यू आइडियोलॉजीज एमर्ज हो रही थी कि कोई भी अगर आपका प्रिविलेज्ड है तो वो बाय बर्थ प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, अपनी मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, पढ़ रहा है, ही इज गोइंग टू अ सर्टेन पोजीशन, एंड इफ देन ही इज अलाउड to enjoy all those privileges, then it is justified enough. So rather a person's social position must depend on his merit. This is what I just explained to you people. Now, these ideas envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean Jacques Rousseau, ठीक है। ये बहुत ही prominent आपके political thinkers भी हैं। So people who are in graduation or who have graduated from political science, including me, we have studied huge and very long theories given by Locke and Rousseau, ठीक है। तो ये लोग one of the most prominent philosophers और thinkers हुआ करते थे। तो देखिए इनके two treatises of government में इन्होंने क्या लिखा, Locke sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarch, ठीक है।
Rousseau carried the idea forward, proposing a form of government based on social contract between people and their representative. तो बेसिकली जब हम इसे ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं तो हम इसे पढ़ते हैं रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जहाँ पे आपको बहुत ही कन्फाइंड मैनर में दिया होगा, ठीक है। अब देखिए, द स्पिरिट ऑफ लॉज में मॉन्टेस्क्यू propose the division of powers within the government between the legislative, the executive and the judiciary. So get ठीक है। मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोला था कि भाई डिवीजन होना चाहिए गवर्नमेंट में, कौन कौन सा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो आज भी इंडियन गवर्नमेंट में आपके एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वी हैव लाइक 3 forms of the government, 3 divisions of the government, I would rather say. This model of government was put in force in the USA after the 13 colonies declared their independence from Britain. The American Constitution and its guarantee of individual rights was an important example for political thinkers in France. तो यहाँ पे जो American Constitution and its guarantee of individual rights को यहाँ पे अगर हम और अच्छे से बोले तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। वो किसने दिया था, वो पॉलिटिकल थिंकर्स जो थे फ्रांस के, वहां से आया था, ठीक है। The ideas of these philosophers were discussed intensively in salons and coffee houses and spread among people through books and newspapers. अब इंडिया में भी जैसे कि आप देखेंगे क्या होता है, हर चाय की टपरी पे कुछ ना कुछ पॉलिटिकल डिस्कशन हो रहा होता है, वैसे ही उस टाइम पे फ्रांस में क्या होने लगा, सलोन्स में, कॉफी हाउसेस में, पब्लिक प्लेसेस में, किताबों के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू ये जो नए आइडियाज एमर्ज हो रहे थे इन फिलोसोफर्स के, वो स्प्रेड होने लगे, ठीक है। ये फ्रीक्वेंटली लोग ये बहुत तेज तेज पढ़ते थे ग्रुप्स में, ठीक है, ताकि उन लोगों के बेनिफिट के लिए जो लिखिया पढ़ नहीं सकते हैं। The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges. क्योंकि जो प्रिविलेज सेक्शन थे उनसे तो वो टैक्सेस ले ही नहीं रहे थे, टैक्सेस तो वही पे कर रहे थे जो अपना हार्ड अर्न मनी था, जिनका वही पे कर रहे होते थे टैक्सेस। उसके बाद ये भी न्यूज आ गई कि लुई 16 फिर से प्लान कर रहे हैं दैट ही विल इंक्रीज और इम्पोज फर्दर टैक्सेस, है ना। तो उसके बाद लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया क्योंकि हम वही सारा पे कर रहे थे एंड अदर पीपल वर नॉट इवन इंटरेस्टेड। अब देखते हैं आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। फाइनली द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज एट द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग। Louis XVI had to increase taxes for reasons you have learned in the previous section. Now let us recall what were the reasons. He had to maintain his courts properly, right? उसके बाद उनकी आर्मी थी, then he had to maintain government offices and institutions, so there were a lot of things, plus the French empire was into a huge amount of debt, तो उन्हें वो भी पे बैक करना था, इसीलिए he was continuously increasing the taxes. In France of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone, ठीक है, rather he had to call a meeting of the Estates General which would then pass his proposal for new taxes. ठीक है, the Estates General was a political body to which the 3 states send their representatives. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. The last time it was done, it was in 1614. तो यहाँ पे रूल तो ये था कि भाई मोनार्क अकेले इम्पोज नहीं कर सकता टैक्स, ही हैज टू कॉल अ सर्टेन मीटिंग व्हिच हैड सर्टेन ऑफिशियल्स फ्रॉम ऑल द 3 स्टेट्स। बट ये मीटिंग हुए इतना टाइम हो गया था, ये लास्ट मीटिंग हुई थी आपकी 1614 में, उसके बाद ये मीटिंग हुई ही नहीं थी। उसके बाद देखते हैं May 5, 1789 में Louis XVI called together an assembly of the states general to pass proposals for new taxes. A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates. उसके बाद the first and second states sent 300 representatives each who were seated in rows facing each other on 2 sides.
while the 600 members of the third estate had to stand at back. अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं क्यों जो 600 लोग थे जो थर्ड स्टेट के, तो उन्हें पीछे खड़ा होना पड़ा था, बिकॉज they were not as privileged as the other two states, right? Sorry. Peasants, artisans, and women were denied entry to the assembly because they were not considered so well, you know, like they were not considered equal. Lack of equality, which almost was in every society back then, and then women were not considered that intelligent enough. Plus, peasants and artisans were these poor category of people, hence they were also ignored and not allowed. उसके बाद उनके grievances and demands were listed in 40,000 letters which the representatives had brought with them. Voting in the States General in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote. This time, too, Louis XVI was determined to continue the same practice. But members of the third state demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote. पहले क्या था कि each state had one vote. अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला? Each member should have one vote. This was one of the democratic principles put forward by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract. When the king rejected this proposal, members of the third estate walked out of the assembly in protest. Obviously, members of the third estate were very large in number. So, if each of them will have one vote, then it will be easier for them to implement what they wanted. But किंग ने मना कर दिया. किंग ने बोला हर स्टेट को एक वोट मिलता था, मैं वही मानूंगा. तो जो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड स्टेट के, उन्होंने क्या किया? दे व्यूड देमसेल्व्स एज स्पोक्सपर्सन फॉर द होल फ्रेंच नेशन. उसके बाद 20th of June को वो असेंबल हो गए हॉल में एक इंडोर टेनिस कोर्ट के वर्सरेस में. They declared themselves as National Assembly and swore not to disperse till they had drafted constitution for France that would limit the powers of the monarch. So basically now they were tired of monarchy and the king and queen rule. So they promised that they will definitely be फॉर्मिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ताकि वो monarch की पावर्स को एकदम लिमिट कर सके, जैसे कि यूके में है. They were led by Mirabeau and Abysses. Mirabeau was born in a noble family but was convinced of the need to do away with the society of the feudal privileges. He bought out a journal and delivered powerful speeches to the crowd assembled at Versailles. Abysses, originally a priest, wrote an influential pamphlet called What is the Third Estate? Now, this is very important. It can be asked to you that what was the pamphlet wrote by him? So you must know the name that it is What is the Third Estate was the pamphlet called which was wrote by him. Now, while the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest France seated in turmoil. ठीक है, बहुत ज्यादा आपका क्योस चल रहा था, जबकि नेशनल असेंबली तो भाई बिजी हो गई अपना कि हमने डिसाइड कर लिया है, हम तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं लेते. बट बाकी जो फ्रांस था वो बहुत ज्यादा टर्मोइल में था. उसके बाद सीवियर विंटर्स आ गई जिसकी वजह से फिर से फसल जो थी वो खराब हो गई और फिर से जो ब्रेड के प्राइसेस थे वो बढ़ गए. ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज. अब क्या होता है ऐसी सिचुएशंस में, जब अब जैसे आजकल है, ठीक है, किसी टमाटर है, टमाटर के प्राइसेस बढ़ गए हैं, डिमांड भी उतनी ही है ऑलमोस्ट, और सप्लाई क्या हो रही है? कम हो रही है, इसीलिए प्राइसेस बढ़ गए. तो अब कुछ लोग क्या करेंगे? टमाटर को स्टोर कर लेंगे. They'll hoard the supplies and then they'll sell it in black or they'll sell it, let's say, in double, triple prices. ठीक है? After spending hours in long queues at the bakery, crowds of angry women stormed into the shops. At the same time, the king ordered troops to move in Paris on 14 July. The agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. अब देखते हैं यहाँ पे. In the countryside, rumors spread from village to village that the lords of the manor had hired bands of brigands
who were on their way to destroy the ripe crops. ठीक है, जो फसल अच्छी हो चुकी है उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए वो लोग अपने रास्ते पे हैं. Caught in the frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked the. They looted hoarded grains and burned down documents containing records of manorial dues. ठीक है, और उसके बाद a large number of nobles fled from their homes. Many of them migrated to neighboring countries. क्योंकि इतनी ज्यादा गंदी सिचुएशन होती जा रही थी. अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? Castle or stately residence belonging to a king or a nobleman, and who is a minor? A minor is somebody. A manor is an estate consisting of lord's land and his mansion. Now, faced with the power of his revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly, ठीक है, and accepted the principle that his powers would from now be checked by a constitution. ठीक है, so he finally gave recognition to the National Assembly and he accepted the principle and that his powers would now be checked by the constitution. उसके बाद 14th of August 1789 में the assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligations and taxes. कि भाई जो feudal system चला था इसमें जो 3 states थे उन्हीं लोगों को taxes देना था और जो लोग privilege जो थे उन्हें नहीं देना था उसे abolish कर दिया गया था. Members of the clergy too were forced to give up their privileges. ठीक है, thefts who were abolished and lands owned by the church were confiscated. As a result, the government acquired assets worth at least 2 billion. Right? So, by far we have completed that how Louis XVI accepted whatever the demands were, etc., etc., and how the French Revolution started. Now, further we have France becomes a constitutional monarchy. This will be continuing in the second part of this chapter, right? So I hope अभी तक आपको ये पूरा जो chapter था जितना भी हमने half cover किया है वो समझ आया होगा. And do watch the part B so that you can complete the entire chapter. And thank you for watching the video. Stay connected to our channel.